हे एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रेशन के बारे में। कितना वो ज़रूरी है और इससे परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट रनिंग। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट 72% ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर, राइट? सो इट इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट थिंग एंड रेस्ट इज एयर, स्पेस, अर्थ एंड फायर. So food is not coming into the picture. Our body is made up of these 5 elements, right? And we crib too much about food, what to eat. So coming back to hydration part, obviously this is very important, but हमें वहाँ पे बैलेंस स्ट्राइक करना ज़रूरी है. पहले हम समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, राइट? सो फॉर दैट just go for water. Go for water. Never ever replace, whenever you feel like thirsty, never ever replace this different type of drinks that are available in the market, right? Don't do that. You will compromise on hydration part. Okay, जहाँ भी आप जाते हैं, for example, even if I'm driving, my car has like water bottles. Okay, even if I'm working, so I always carry my water bottle and keep my water bottle near my desk where I can just go for it whenever I feel like. All right, so it should be handy all the time and never ever replace waters with different kind of drinks. Just drink plain water. So that's the first important part. And if you are well hydrated, obviously, you can perform better, and on the final day, you will not be getting any cramps or something like that because of lack of hydration, right? So you will not get all those things if you are well hydrated throughout the week and throughout your training. Next important thing is, आपको जैसे अब समर्स हैं, आई एम रिकॉर्डिंग दिस एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन समर्स. सो समर्स हैं, समर्स में ये ध्यान रखना है, वट एवर वॉज easy in winters, it will be challenging in summer. So it's because of the weather outside. ठीक है, तो वैसे भी एक तरह से वो चैलेंजिंग हो जाएगा. एंड इफ यू आर फीलिंग थर्स्टी ड्यूरिंग योर वर्कआउट्स एंड ऑल दैट, इट इज नॉट जस्ट कीप कंज्यूमिंग वाटर एंड ऑल दैट, right? If you mindlessly consume it, you will get cramps because you are over consuming it, and that water will jump in your stomach. So it is not because of the water. Beyond a point, इसका रोल नहीं है. बियॉन्ड ए पॉइंट ये नहीं सोचना है कि मैं पानी ही पीता रहूँ, और बिकॉज आई एम नॉट हाइड्रेटेड दैट्स व्हाई आई एम नॉट रनिंग दिस हाफ मैराथन एंड मैराथन इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ. नो, इट इज बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड इनफ. खाने का, पानी का एक रोल है. कौन से शूज़ आपने पहने हैं रेस में, कौन सी किट आपने पहनी है रेस में, इसका एक रोल है जो कि बहुत छोटा सा पार्ट है. रेस्ट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग. ये नहीं इमेजिन समवन इज वेल हाइड्रेटेड एंड वेल नरिश्ड एंड ही इज एट देयर आइडल वेट एंड पीक ऑफ फिटनेस, ही विल बी अ गुड रनर एज वेल. नो, I mean, you need those running muscles. Agar let's say I'm running at 1:11 for a half marathon, I'm one of the fastest in India for my age category, and obviously then I'm one of the fittest as well. So ये नहीं होगा कल अगर मैं बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दूंगा तो 10वें दिन या फिर एक महीने बाद मैं जीतना भी शुरू कर दूंगा वहाँ पे. No, it is not going to happen like that. If I train like that, even I'll get those soreness, and that's absolutely fine. It is not because of the protein powder I'm not having or I'm not well hydrated. It is because I am new to certain things. I don't have that particular sports muscles which I need to develop over a period of time. So start thinking like a sports person. That's what majority of amateur runners, they lack this right approach. You're not lacking any like some E is equal to MC square thing कि आपको ये formula मिलेगा, you will apply it and you will boom. No, it is like years of practice. And just get in that habit of building those muscles. And you have seen, like मेरे पास या फिर जो लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं उनके पास केवल एक ही फ़र्क है. आई हैव दैट एक्सपीरियंस. आई हैव सीन ऑटम, आई हैव सीन winters, I have seen summers, that how my body will respond in this weather, and different level as well. When I was running 1:37 for a half marathon, I know how my body will respond in summers, winters, autumn and spring season, right? Same when I was running at 1:33, then 1:30, then 1:28, 1:17, 1:14 and now 1:11. It's just the experience, and that's what matters eventually. Right, but obviously we need to strike that right balance. So it is about the right balance, and if you are just starting off, summers are there, you are feeling like thirsty and all that these days, that's absolutely fine. Don't push mindlessly. All right, so that's all about hydration. और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, obviously you can cut it down on your things, your workouts. Okay, और अगर आप throughout the week you are well hydrated, that's what matters. That's what matters. तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है. जैसे अगर मैं और थोड़ा सा एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे अगर मैं 10 किलोमीटर रेस कर रहा हूँ, 5 किलोमीटर रेस कर रहा हूँ इन विंटर्स और वेदर इज परफेक्ट आउटसाइड, सो आई डोंट कंज्यूम वाटर ड्यूरिंग द रेस. And if I'm running half marathons, obviously I'll take it.
that too few times, even maybe maximum 2 or at max 3. I mean maximum 2, that's it. I don't disturb my running rhythm, and that's what I have practiced in my training run as well. So I replicate the same. Race is nothing but another quality workout for me, right? So race is nothing, just another quality workout for me. So train. If you train well, you will not bleed in your races, and no miracle is going to happen on the race day. Whatever you are training for, you will get the same. Just because you are well hydrated, or maybe you are wearing the right shoe or the world best shoe or wearing the world best kit, you are going to perform. No, it is because of the training. What you have done in the training, you will get the same in your races. So I hope you get this thing, that hydration का कितना role है. You have to be fully hydrated and don't go for the random stuff and all. Just stick to water, plain water. Right? I hope you find this video useful. I have made it like point shooting style type, right? No random things or going here and there. बिल्कुल मैंने स्पेसिफिक आपको बताया है कैसे आप वाटर का कितना रोल है, क्या रोल है. ऑब्वियसली इट इज़ इंपॉर्टेंट, बट कितना इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको एग्जाम लिख रहे हैं तो उसमें पेन लेके आना ज़रूरी है, बट कौन सा पेन आप लेके आ रहे हैं, बियॉन्ड ए पॉइंट इट इज़ इररेलेवेंट थिंग. बस वो चलना चाहिए, उसके बियॉन्ड रोल नहीं है. अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, सो यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड along with pen. I hope you get that clarity. So this is Shan. I hope you like this video. Let me know in the comment section below. I'm signing off. I'll see you in my another video. Bye everyone.